Okay, so we are live and you can start. Great. Hi, everyone. That's Devji, Harsh, Manjeet, and Vikrant. Yes, ma'am. Hello, ma'am. How are you all? I'm good. I'm good. How are you, ma'am? Yes, I'm very good. Good. I had a good Diwali. So how about you all? How did it go? It was good. fine. Not much fun. Okay. Why? Yeah. Yeah, ma'am. I don't know. It was not fun burning crackers. Kisne bola, not much fun. So what happened? I don't know, ma'am. It was like all right. Yeah. I thought it will be fun to burn crackers, but it was not. Like, Okay. as it was used to be a lot of fun, but not now. Not anymore. Maybe we're growing up, right? Yes, ma'am. So yeah, expectations change. That's right. Okay. Yeah. So, we're going to keep it easy and nice and conversational. So yes, like you're talking, do tell me how it was, how was, how you're doing. So I'm going to go one by one. And what happens that when you speak, आपका नाम वहां से हट जाता है, so I'm not able to see who's talking. So if you could please just introduce or tell me that, ma'am, this is, for example, Kshitij talking. Okay, so then it's easy for me. Okay, All right. ma'am. So Yes, ma'am. so who'd like to go first? Just tell me a little bit how Diwali was. What did you get up to? Did you do anything special at all? Yes, ma'am. Can I go first? Like, Yes. I'm And who's Kshitij. that? Kshitij. Kshitij. Perfect. All right. And everybody, do please put on your cameras. It's always more fun, isn't it? Yes, I'm Correct. like, so after celebrating Diwali at home, Yes. I went to my grandparent house. Grandparents' house. Yes. Yes. There we on Bhaiya Dooj. Okay. Every cousin meet up there to celebrate it. All. Yeah. All Sorry, cousins. Kshitij. I will be, or everybody, I will be interrupting you in between so that, I can correct you. Is that all right? Yeah. Yes, ma'am. Yeah. Because last time we decided, guys, that, without getting offended, you people need to understand the whole point of doing this class and conducting this class is basically we should correct you when you're making mistakes, right? So don't feel offended. ये जगह है आपके सीखने की और जितना आप लोग freely लोगे हाँ मैंने बोल दिया और मुझे correct किया अब मैं practice करूँगा ठीक है that is the whole entire purpose of this class otherwise तुम वही रहोगे जहाँ तुम थे ठीक है तो प्रोग्रेस के लिए इट इज इंपॉर्टेंट टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन ठीक है थोड़ा डिस्कम्फर्ट होगा आपको बट डोंट वरी अबाउट इट टेक इट वेरी लाइटली डोंट गेट टू दिस थिंग कि अरे मैंने ऐसा कैसे बोल दिया हम भी इतने बड़े होने के बाद भी बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं लाइफ में ठीक है बिल्कुल बिल्कुल absolutely correct and also feel free to ask ma'am how was it or how can I improve on it so it becomes a two-way street so it's always nicer. Please carry on, Kshitij. I'm sorry I interrupted you. Yes, It's all right. Like all of us met there and celebrated Bhaiya Dooj, and it was kind of fun meeting them once in a year. Oh, I think ma'am is gone, I guess. हाँ उनका आज वाईफाई बहुत ये है हाँ so आपने जब बोला we meet them once a year so I'm guessing that's the only thing you can tolerate is it like meeting them once a year just kidding huh I think Nalini ma'am is stuck Yes, ma'am. okay हाँ continue I'm listening to you come on जब तक वो वापस नहीं आते तब तक I'm listening Yeah, like हाँ so tell me yeah, I just try to talk with them and my sister showed try to his, talk with them or would it be better to say having a try to have conversation conversation with them. yeah exactly Yeah, so ask them what they are doing in their life and what are their fun and what are they are just trying to have in their life. मतलब And sorry हाँ बोलो like what they are doing in their life, what are their goals and how they are enjoying things and how's their college going on. हाँ
Okay. Okay. So it was kind of fun. Yes, Getting to know and people Didi showed me her drawing history book. It was very Okay. amazing. So tell me something, since you have joined the class, is there anyone in your life who speaks English and you found yourself that you kind of got some confidence to kind of conduct this conversation in English? Has that happened to you yet, or you're still underconfident? In my house, no one really speaking English that much. 1 minute, I'll correct you. At my home, nobody At really speaks English. English. Nobody. Nalini ma'am is back. Yeah, I think you are having a lot of issues with I'm your. so sorry. I'm so sorry. I just changed the Wi-Fi. Mhm. Yeah, I apologize, everyone. Yeah, Kshitij, please carry on. Yes, So he finished conversation with me a little bit. I said by the time you're here, so hum baat kar rahe the, and Sure, sure. I was just asking them how are they feeling since they started this class. Have they like kind of got a little bit of confidence speaking either in school, college, or at home? So he was just informing that none of his parents or his family speak in English, so he's not got that kind of a practice. Yeah, but I Sure. tried No, to and talk to people. Sorry, yeah, yeah. what's it? Ma'am, I tried to talk to people on the Discord in English, so Okay, it good. just helped a bit. Okay, good. Absolutely. No, very good, Kshitij. I mean, you have to keep trying. Yes? Yes, ma'am. That's wonderful. I'm sorry I missed your conversation. So who'd like to go next? Anybody? Go in order, alphabetical order, so it's easier. तो घड़ी घड़ी Alright. ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है? अभी ठीक है. आदर्श start करेंगे और Yes, go ma'am. from A B C D whatever next, so you know, yeah. Yeah, go ahead, Adarsh. Good evening, ma'am. So my Diwali was actually fun. I really did a lot Okay. of things this time. Last year was because we were facing all of this lockdown and COVID, so we couldn't do much. But this year we did a lot of things. We went out and did the Diwali shopping, and this time I did bought a lot of crackers too, and so I and also I was joined with my elder brother. So I was accompanied by, or my elder brother joined me. okay, so I was accompanied by my elder brother, and we did a lot of fun things along on the Diwali's day. Okay. And, Okay. Wonderful. and yeah, that was on the Diwali, and after that we just get along on our lives. So we got on with our lives. Yeah. Normal life. Okay, wonderful, wonderful. That's nice. The whole, yeah, you put it together very nicely. And then you know how we have so many high expectations from Diwali, and then once the festivals are over, then it's like you're just back to normal life. So I like the way you put that, then we came back to got on with our normal lives. Excellent. Yes, all right. Yeah, thank you. So next is Devji. Hi, ma'am. This is Devji. So this time my Diwali was quite good. I went to my so there was Lakshmi Puja at two of my friends' homes. So I was invited by both of them, and I had to go both the places. And then yes, so you're lucky. You're lucky. and they're my very close friends. So yeah, and I had to both of them offered prasad, and after that, uh, after eating at one friend's place, I I was full. So it was yes. So it was, but again, when I went to that other friend's house, they forced me to eat. So it was fun, but yeah. And a lot of so we tend to do that over Diwali, isn't it? We tend to overeat and overindulge. Yes, ma'am. And on Bhaiya Dooj, my maternal uncle came to our home. So yes.
Yes. So you don't end the sentence. So yes, no. So you have to elaborate a little bit more, Devjit. So your maternal uncle came over for Bhai Dooj, and what did you do? And that day, I went out and bought sweets for my Yes. maternal uncle, and also we were to meet our cousins, but my cousin couldn't come here because they were busy. So, Okay. so my maternal uncle came. We celebrated the ritual of Bhaiya Dooj, and after that, after eating lunch, he left. All right. Okay. Okay. Yeah. Very nice. Nice. So you really did have a good Diwali and Bhaiya Dooj and Yes. everything. So that's nice. Okay. Well done. Well done. Okay. Right. Who do we have next? Krish or Manjeet? Yes, Ma'am Manjeet. Please. Yeah. Go ahead, please. Yes, ma'am. I'm Manjeet, ma'am. Yeah. Go ahead. Go ahead. My Diwali was quite good. I got the chance to go to my hometown, and I visited various temples in my village. It is a rural area, and I visited many Okay. temples. There is one temple which is on a very high mountain, on a hill. Okay. Sorry, on a hill. So there is a temple. No, there is a. Sorry, how did you say there is a something? There is one temple. There is a temple. Yes, there is a temple in my village. Yeah, wonderful. Yes, ma'am. It's on a very high hill. Okay. And I celebrated Diwali there with my family. And in the night only, I came back to my house, which is in city, and I did not burst crackers, but the people here did burst very many crackers. A So lot there was of crackers. Yes. a lot of crackers. So there was a lot of pollution there. So I thought, Yes. So you were one of the good ones. You are conscious of your environment, and you did not, you know, you did not burst the crackers. yes, ma'am. Yeah, that's very good. That's very good. So I think there's one sentence that you said, that one line, that we came back only at the same. Yes, Yeah. ma'am. So yeah, जो only आपने use किया था ना, वो वहाँ नहीं लगाएंगे हम उसको. We will say, you can say that I spent the whole day and we returned back at night. Okay, Yes, so ma'am. we spent the whole day there and we only returned at night. Yeah, we only returned late at night. Yeah. Okay, but very nice. Yeah. Would you like to add some more, or have you finished? No, ma'am, that's it. Ma'am, we don't celebrate Bhai Dooj. Okay, yeah. Well I don't done. know Thank why. you. Okay. You don't know why. Okay, okay. That's all right. That's all right. Okay. So thanks for that. All right. Who's next? Ma'am, me, Krish. Krish. Go ahead. Krish. Yes. So, ma'am, Diwali was very good this time. So we all on the first day, like before Diwali, I decorated my house with lightings and all that. I helped my mom. After that, on the main day of Diwali, we had a Lakshmi Pujan. I did that with my family. After that, we got to a temple, and from there, me and my cousins, we all got it to a cinema to watch a movie, and we celebrated. That means got it to hotel and all that. And after that, I came home, and at morning, me and my friends blowed much. It was not much crackers, but we enjoyed like going to a walk and meeting all that stuff. Okay. Voice is coming. Voice is okay. Yes, yes, I can hear you. Okay, Yeah. okay. So Yes, we like yes. blowed some crackers, and small children were blowing the crackers, and we were enjoying like seeing to them and helping them in something. Sorry, I'll just. Yeah, good. We don't say blow the crackers. We burst the crackers. So we bursted the crackers. Means it was not too much, but somewhat we burst. And with my smaller friends, which were there in society. No, small friends were there, like
small Okay. kids which were there. So they were bursting the crackers and we were helping them and seeing them and enjoying that. And after that, we ate some traditional plates on Diwali we eat, and we have enjoyed that much. Okay. All right. That was nice. Very nice. I really like the little word that you said that I helped my mom. Nice. I like to hear that. Okay, thank you. Okay, well done. Well done. We have to, yeah, good. We have to be, everything goes and we have to be people, but we also have to be respectful to our elders, right? Yes, Yeah. yes. All right. It's Thank necessary you. for So who's each going of next? Absolutely. बड़ों का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है. Yes, to get success in life and many things. Absolutely. Very true. Well said. Well said. Thank you. Okay, Vikrant. Hello, ma'am. Hi, Vikrant. Yeah, please go Hi. ahead. So Diwali this year was very great. We cleaned the house. Then my mom made some Diwali foods, and I bought new clothes. Everyone bought new clothes. And on the day of Lakshmi Pujan, there was rain, and my mom had drawn a beautiful rangoli, which got wiped away due to the rain. Oh my God, that's so sad. And then we did the Lakshmi Pujan. After that, rain stopped and we burst some firecrackers, not bombs, just little firecrackers. And after that, we ate the foods that were made at home, the Diwali foods, chakli and chiuda. Okay. The special, yeah. Yes. Now I'm just enjoying the food, the Diwali food. Yeah, still, so there's a lot of leftover. Yes. Yeah. Very nice. Very nice. Yeah, thank you. Thank you for that. Very nicely structured and very clear. Okay. Is anybody left or have we covered everyone? Aman is left. Acha, actually, yeah, please go ahead. Aman. Hello. Hi. Ma'am, my voice is clear? Yes, it is. Hello. Ma'am, this Diwali is very, not very outstanding, but ma'am, my home is not celebrated in Diwali, but Diwali festival. But me and my sister going to my aunt and cousin their home, and I celebrated the Diwali in my aunt and uncle's house. Yes. Okay. So you had to say that we do not, my family or my parents don't celebrate Diwali. So Yes. Okay. And okay. And also the part where he said me and my sister, it's my sister and I. Perfect. Yes. Always, like ma'am said, always you refer to the other person first and then to yourself. So that's polite English. Yeah. Yes, ma'am. Go ahead. Okay. And ma'am, I may make the dishes and recipes in my aunt and cousin's house, and first we did the puja, Lakshmi puja, and later we celebrate the. I did not burst the whole burst the crackers, but my aunt's children are celebrated the crackers and whole. But I did not burst any crackers in this Diwali. Okay. So you had to. So when you say that you cook some dishes, right? So how you phrase it is that I cooked the dishes. So and because the cooking word has to come in, and then you mentioned that I cooked a lot of dishes for my aunt and uncle, right? Yeah. Okay. All right. That's wonderful. So you let your cousins burst the firecrackers, but you did not do it yourself because you were conscious that it should not be done, right?
Yes, ma'am. Okay, well done, well done. So, and now you've come back home, I presume, from your uncle and aunt's house? Yes, ma'am. Later I come to the my home I and me came and back. my Yeah, you sister. came back. Wonderful, wonderful. All Okay. right, that was very nice. Thank you. Yeah, so everyone, that was very well tried. But and I will share now what I did for Diwali. So yeah, I had a nice time with my husband and my daughter. We did all the traditional things. We made the rangolis a day before. And of course, the house was being cleaned for the past, I think, almost 2-3 weeks. I have been cleaning the house. So it was nice. And we had a lot of sweets, and we also had a few Diwali parties. So yeah, all in all, it was really nice. And now it's, like you said, back to normal life. And okay, so that was it was great interacting with you all. Now I'm going to talk about something which is called when you speak English, there's something called intonation. Intonation को explain करने के लिए, it just means that आप किस तरह से, जैसे हिंदी में हम बात करते हैं, उतार चढ़ाव हमारी लैंग्वेज में या सेंटेंस में होता है. So that's very important when you have a conversation with anyone. जैसे अभी मैं अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट कर रही हूँ, जैसे सॉफ्टली बात कर रहे हैं, मगर उस आवाज उसमें भी we have the up and down. So that's called the intonation, and it's very important when you have that conversation. Okay, when you have a conversation with somebody. So there are a couple of ways you can, जैसे when we ask a question of somebody, right? तो जब हम जैसे सवाल पूछते हैं, तो आपका नाम क्या है, तो वो एक ऊपर की तरफ, my voice is going upwards. So same, what's your name? You're asking like a question, right? So that is important. Or something like another question is Indian. So I'm asking a question. So the end of it, it goes up. I won't say, are you Indian? No, are you Indian? So, इसको बोलते हैं जो उतार चढ़ाव को intonation बोलते हैं. So ये एक बहुत, it's very important to know. So when you ask a question, it goes up. I'm not saying that you raise the level of your voice. Yeah, can you all hear me clearly? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, okay. Sorry. Yeah, my Wi-Fi was giving me a message. All right. Whenever you ask a question, so it always, it ends with a slightly higher note. So, are we leaving soon? So, आप question पूछ रहे हो, ठीक है? So you end like that. So, अगर मैं उससे आपसे पूछूं, are you leaving soon? Are you leaving soon? मतलब it looks flat. So when you ask a question, the intonation goes or ends higher. Same as जब आप किसी को जवाब देते हो, when you answer back, okay, then you don't raise your voice. Then you just go straight that yes, I am going to the movies, or yes, I'm going home. So एक वो नीचे की तरफ, when you say the home, you're slightly deflecting your sound to go down. You won't say I'm going home. No. It's a slight deflection. तो इसको बोलते हैं intonation, जो हम उतार चढ़ाव, ये बहुत जरूरी होता है when you have a conversation with somebody. Then there is another where, both the up and down are happening in the same sentence. So when you, for example, when somebody is, asking your question and you answer, someone says that, what are you doing these days? Or what are you doing these days? So you want to answer and say, I am studying, or I'm doing a job or something. So in that, you take it up and you take it down in the same sentences. So for example, you say that, I am studying very hard for my CA exams, and I hope I get a job. So it has gone up. I'm studying very hard for my exam, and I hope I get a job. So, same utar chadhav is happening in that sentence. For example, if someone says, do you like this car? I like this car, but it is too expensive for me. Right? So when I ask the question, do you like this car? So I have gone up, but when you answer, you don't say, I like this car, but it is too expensive. No, you have to, I like this car,
but it is too expensive, or I don't like the color. So that modulation of the tone is very important जब हम किसी से बात करते हैं. Right. So see, when we are having a conversation with anyone, it's very important. Lot of factors are there. जैसे आप बोलते हैं कि eye contact होना चाहिए. Always make eye contact with the person. Then the facial expressions, they are very important. You have to show that you are interested. तो body language, कि आप उसको कितने ध्यान से सुन रहे हो. When you are having many times, people are not interested. Someone's talking, if I sit ऐसे करके टेढ़ा पैर लग के ऊपर, I'm showing that I'm not interested in talking with you, right? But when I am sitting straight or I'm leaning towards you, it's very important the other person gets the impression कि मैं उनसे बात करना चाहती हूँ. So all these things, and then of course the voice fluctuation, all these things, इसको बोलते हैं your body language, your eye expression, your eye contact, all these make a very important, they're very important parts of communicating with somebody else. You all also know कि जब हम किसी friend से बात करते हैं, body language, you're relaxed, it doesn't matter. But when you are speaking to somebody who's elderly, or you're going for a job interview, or you're speaking with a teacher, or in that scenario, so in those scenarios, it is very important to have the right kind of body language, the right kind of, the way you speak, it has to be more respectful. Understand? जैसे हम लोग, the way you speak to a friend and the way you speak to your parents should be very different. There is a respect, and then there is that comfort with your friend. So all these things go on to make a nice conversation. Why is it that you sometimes meet somebody and you say, oh my God, we just clicked, we got along so well? So it's not only is it the thoughts that you had that were matching with each other, but you enjoyed the conversation with them, is because they made the effort, you made the effort, and you both understood each other, and you both somewhere you were happy talking to each other. So that happiness factor is the reaction you're giving to him, कि जब उसने कोई बात बोली तो आपने इंटरेस्ट दिखाया. So all these factors, जो होते हैं, ये बहुत important होते हैं to hold a good conversation. So it's not important to talk big words only, but it is important to have the right body language, show the right interest, show that आपको उनकी बातों में interest है, genuinely interest है, and that all comes when you make the right effort, right? So all these things, they are also very important. So I am going to see, I have given you a little bit of a background, how your tonal manner, your tone is so important. Same cheese हम गुस्से में भी बोल सकते हैं, and the same thing can be said in a very nice, soft manner. You may scold somebody, but it is in an even tone. Just the same word, for example, Devjit, just try with me. If I am angry, okay, and I say, if I'm angry and I want to say sorry to somebody, but I don't mean it, right? So how do we say? We say, sorry. We say it like that, right? We don't mean it. So the body language is so important. Now tell me, if I genuinely mean sorry, aap kaise bologe, Devjit? If you're genuinely sorry. So if I'm genuinely sorry, I would say, I'm really sorry. So. And your tone also says that, right? So it's so important, the same word. And if you are even more sorry, Kshitij, just try. If just abhi Devjit was sorry and he said it from the heart. Now, Kshitij, you are like so, bahut badi galti ho gayi, and you want to say you're more sorry. How will you say it? I'm so sorry for that. So you get that expression. Now I can't see, your camera is not on, I can't see it, but I can feel that you're genuinely sorry. Right? So this is all tone. Understand? And it's so important. Or when you say something like this, that, hey, I apologize, I'm extremely, extremely sorry. अब आपको समझ में आ रहा है जब आपके वॉइस में वो दुख भी प्रकट होता है, आपने डिफरेंट वर्ड्स भी यूज किए, आपके टोन्स भी आ गए,
पॉज भी आ गया, आपका वॉल्यूम यहाँ पे हल्का हो गया, वहां पे पिच हायर हो गया. सो ये सब इम्पोर्टेंट है जब हम कॉन्वर्सेशन करते हैं. ठीक है. Yeah, these exactly. And so same word, but how you say is so important. You understand? So that genuineness comes from the way you say it. Now again, let's try some more. I think this is good fun. So same, abhi anger dikhaya. Now let's try and say thank you. So Aman, you want to say just a little, like a flat thank you. How will you say it? Aman, can you hear me? Ma'am, hello. Okay, he can't. Yeah. Yeah. Ma'am, can you repeat, please? Now a flat thank you. Yeah, so I want to just practice saying the same word but with different expressions. तो एक होता है जो आप normal thank you बोलते हैं, एक जो हम बहुत खुश होके बोलते हैं, और एक जो बिल्कुल बेमन से बोलते हैं. Right? So I want you to give me a thank you which is like very flat and boring. Thank you. Great. Okay. Vikrant, please give me a thank you which is like very happy thank you. Thank you. Really, thank you. Yeah. Okay. Yes, that's very good. Yeah. So see, I can't see your faces, but I can feel that you are, a happy thank you. And Manjeet, give me a thank you where you don't mean your thank you, like you're actually ऐसे ही बोल रहे हो. Thanks. Yeah, thanks a lot. So see how important the same thing is. Now same, let's try if somebody is, you want to scold somebody. Let's start with, okay, Adarsh. So I want you to, you have a younger brother or sister? No, ma'am. I have elder brother. You have an elder brother. All right, elder brother, भैया को गुस्सा करना है कि he wore your favorite T-shirt without asking you. So how will you say? So why did you wear my T-shirt? इतने प्यार से. This is a very very ये गुस्सा नहीं है, but you're still asking him, right? So this is. Yes. अब मुझे बताओ और गुस्सा, जब बहुत गुस्सा आया कि उसने आपकी टी-शर्ट जला दी. Okay, so why did you burn my favorite T-shirt? Can't you see what you did? Okay, अभी भी आप बहुत प्यार से बोल रहे हो. I think भैया से डरते हो. Yes, ma'am. Okay. He is my elder brother, so I really cannot talk to him like the way I will talk. Yeah, but this is role play. Think, okay, maybe think it's a friend who, you're not swearing here, but you're like really, really angry at him. So how would your tone would change, right? Yes, ma'am. Yeah. So that's what I'm bringing in, that, how important same cheese. You can actually gusse mein, how dare you? What were you thinking? You didn't even bother to ask me. हम जब गुस्सा करते हैं तो पूरा गुस्सा. But same चीज जैसे कि आदर्श ने दिखाया कि हम उसको soften करके भी अपना displeasure we can show it, right? So it's very important to, depending on the situation, that you handle it in a very graceful manner, and that all can happen by your voice modulation. Understand? So in a conversation, very very important. Always remember that, and it will always help you. You see that other strategy, we say that when you're very angry, count to 10, control yourself, control your anger, right? So it helps you control your speech because it takes the edge off the anger. Then the same thing that you would have screamed and shouted, now you say it in a softer manner, right? So that is important. So now I will come back to the original one we left off, the PowerPoint we were doing last week on activities. Now, with everything that I have taught you about intonation or spoken to, I would like you all now to use that and read this. Okay. Can you see my screen now? Yes, ma'am.
Can everybody see my screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Okay. So remember we were learning about Rohan and his family, and we had done about his dad who was an architect and he made buildings. Do you remember this? Yes, ma'am. Okay. Yeah, you remember this. And he also did My Dad Loves to Write. So that was another thing. So next one is now he's spoken about his dad. Now he's going to, we did this as well, hardworking. Now about the mom. Okay, who would like to read this? And also just try and use your voice modulation. So Manjeet, would you like to go and read this? Yes, ma'am. Go ahead. My mom is Nina. She certainly has a green thumb. She is keen on gardening and grows decorative plants, fruits, vegetables, and flowers. This year, she had a bumper crop of fruit. Guess which is my mom's favorite flower? Of course, it's the rose. Good. So I like the last sentence you did. You emphasized the word, of course, it's the rose, right? Huh. So that was very nice. But जब आपने उससे पहली लाइन में जो question which you asked, I would like you to now ask the question with the, that intonation. So when you ask a question, कैसे हम पूछते हैं? Just try again, Manjeet. Guess which is my yeah. guess which is my mom's favorite flower. Okay, so a little, yes, I saw that coming. So now और question जैसे हम हिंदी में पूछते हैं, so just try and use that guess. Which is my mom's favorite flower? So you're asking a question, right? So that should come out more clearly. And then even in the previous one, she is, so when you're talking about somebody, you can make it more animated. जैसे animation हम देखते हैं ना, cartoon characters. So when you speak as well, you can add in like this. She is keen on gardening and grows decorative plants, fruits, vegetables, and flowers. And this year, she had a bumper crop of fruit. Right? So that is another way of, so try and add that voice modulation, right? Okay, well done. Okay, next one. Yeah, okay. So अब मैं ये सुनना चाहती हूँ आपकी आवाज में. Sorry. Maybe Nalini, after they practice one para, you can either say it or I can say it. So they kind of get an idea also, like how. Good idea. Said, yeah? I think good. Yeah, very good idea. Have we done this? Sorry. Now this, yeah. Okay, who'd like to try reading this? Am I? Go ahead. Who's that? I'm Adarsh. Yeah, perfect. Go ahead, Adarsh. Okay. My sister Anya will be a big star, I'm sure. She is very talented singer. Initially, it was just her hobby, but after she graduated, she joined a music band, and then she began writing her own songs. She regularly upgrades her skill and knowledge in music, taking vocal classes, DJ courses, learning to play the piano and guitar. I'm really proud of her. Good. I like the way you did and especially the last. I'm really proud of her. Yeah. I think the only place I would like you to make it a little bit, so she is a very talented singer. Yeah. Okay. No. Well done, Adarsh. Okay. So I will read it like Rachna ma'am just suggested, and you can all listen in. So Anya is a singer and songwriter. My sister Anya will be a big star, I'm sure. Confidence kissing, I'm sure she's going to be something. She is a very talented singer. So you can emphasize the word very as well. She's a very talented singer. Okay. Initially, it was just her hobby. But after she graduated, she joined a music band. And then she began writing her own songs. She regularly upgrades her skills and knowledge in music, taking vocal classes, DJ courses,
learning to play the piano and guitar. I am really proud of her. Okay? Yeah. So it's just, the same thing, but जैसे वो बोलते हैं ना, जब when you act, so with your facial expressions, you bring in all that. So now when you speak, we bring in all this through just the voice modulation. So even if my camera is not on, just by listening to my voice, you can feel what I'm trying to express, right? Yeah. I think Krish has asked me a question. Krish, I will answer this question after this English session. This has nothing to do with जो हम अभी सीख रहे हैं, ठीक है? कि आपको जो क्वेश्चन आंसर चाहिए मैं थोड़े टाइम के बाद दूंगी at the end of the session, ठीक है? Okay, please go ahead, Nalini. Thank you. Yeah. Okay. Do you all know this singer? Yes. Do you like listening to Adele? Yeah. Yeah, she's one of my favorite singers as well. All right, next one. Okay. Vikrant, would you like to try this one, please? Yes, ma'am. Go ahead. Since my childhood, I always enjoy reading. We all have our comfort reads. Some people like their armchair mysteries or their historical fiction time or travel romances. Some people insist that they only read classics, but I read anything under the sun. I don't have a favorite genre really. Okay, wonderful. See, when you see, thank you, Vikrant, that was good. Okay. When you see this exclamation mark, right? Anybody knows how, or how that sentence then should be read? We have to exaggerate that thing. Perfect. Very good. So, it's giving you that put in an expression, put in an extra expression, so read, read, read. So it's, emphasizing it even more. So jabi bhi hamara hi aaye. So Vikrant, coming back, I see another exclamation mark later on. Some people insist that they only read classics, but I read anything under the sun. Would you just like to try this for me again and see the exclamation mark? So ek Yes. bari fir se, please. Yes. Some people insist that they only read classics, but I read anything under the sun. And now exaggerate this even more for me. Thoda aur jor dal ke. Okay. But I read anything under the sun. Okay. Okay. Yeah. Ma'am, Okay. can you show me? How Yeah, to do sure. that? Yeah, good try, but good try. Yeah, it was a Maybe definite both can, improvement. Nalini, if we both say it, maybe we can show के how अलग-अलग लोग अलग-अलग तरीके से बोलते हैं. कोई right or wrong so, होता है, but हम दोनों similar way में आपको पढ़ के. So Nalini, you go first. Yeah. All right, Alison. So read, read, read. Since my childhood, I always enjoy reading. We all have our comfort reads. Some people like their armchair mysteries, or their historical fiction time, or travel romances. Some people insist that they only read classics, but I read anything under the sun. I don't have a favorite genre really. Okay, go ahead, Rachna. Read, read, read. Since my childhood, I always enjoyed reading. We all have our comfort reads. Some people like their armchair mysteries or their historical fiction time or travel romances. Some people insist that they only read classics, but I read anything under the sun. I don't have a favorite genre really. Perfect. देखा तुमने कैसे चेंजेस आते हैं वॉइस में ऊपर नीचे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप अंग्रेजी सीख रहे हो. ठीक है. Wonderful, wonderful. Yeah, really. And Vikrant, would you like to just read these sayings here as well, the quotations? The world Yes. belongs to those who read. Yeah, just go ahead. The world belongs to those who read. Reading is dreaming some with more, eyes. give some more. Okay. Give me some more expression, please. The world belongs to those who read. Good. Much better. Reading is dreaming with eyes wide Next one. open. Okay. The more you read, the more things This you one. know. The more that you learn,
the more places you will go. Okay, so see how those words, the important words, are already in color. So, you can really emphasize those. Yeah, so the more you read, the more things you know, the more you learn, the more places you go. Right? Okay, and then this last one. A book is a dream that you hold in your hand. Yeah, that was nice. So that was just flat. You're just making a statement. That was perfect. Yeah, that was really good. I think we're on time. It's 8, right, but Rachna? I think we started at least 5 to 7 minutes later. Okay, So 5 minutes sure. okay? In 5 minutes. Bilkul. Absolutely. Okay, so this actually we've already covered. What is your hobby and why is it important for your life? And so this is when people ask you, do you have a hobby? And then, these are the different kind of hobbies. And I think we briefly touched upon them already last week. Yeah, you can just read them. I gave them open-ended and close-ended questions. आप लोगों ने practice किया? कुछ पढ़ा? Yes, ma'am, I have read them. Okay. So you understood the difference between the two, right? How important it is when you're making conversation. Yes, ma'am. Like basically, yeah. Close-ended question consists of mostly yes or no. Correct. Yeah. Very good. It's so boring, right? अगर से किसी को पूछा what is your hobby, वो बोलता है knitting. और Yeah. तुम फिर बोलो अच्छा ठीक है, okay, हो गया, Yeah, conversation it's वही खत्म हो गया. Then you will ask, so what do you like to knit? What is your favorite piece? Have you learned anything new? So these are the questions when you make conversation. Okay. Very true. This is my last slide. So this is very interesting. Somebody just read this for me, please. Change नहीं हुआ है, नलिनी? हाँ, अभी change हुआ. My hobbies include eating and complaining that I have gained too much weight. I never know what to say when people ask what my hobbies are. I mean, I'm a mom. I enjoy trips to the bathroom alone and silence. Okay. आपने अभी ना बिना पढ़े पढ़ लिया, right? Like you didn't know what is coming next. Now that you know what's coming next, can you try again? Oh, ma'am, which one? The whole thing, because I didn't find it like तुम ऐसा सोते हुए बोलोगे तो फिर कोई सो जाएगा थोड़ा. हाँ, बिल्कुल, because this is a joke they are making, so just try and add that humor in your voice. जो मैम बोल रही हैं वो यही बोल रही हैं कि थोड़ा उसको जैसे ये मजाक कर रहे हैं, it's so just try now reading it with that. I never know what to say when people ask what my hobbies are. I mean, I'm a mom. I enjoy trips to the bathroom alone and silence. Like this. Very good. That was much better. Yeah, that was good. Well done. Nalini, so same now. Nalini, why don't you do it and read it and show? Okay, sure. And I am a mom, so yeah, it's coming from the heart. Okay. I never know what to say when people ask what my hobbies are. I mean, I'm a mom. That's a full-time hobby. I enjoy trips to the bathroom and being alone and having all that silence. Yeah. Difference समझा? Yes, ma'am. Okay. And then ye pehla wala bhi please read again. This is really funny. My hobbies include eating. My hobbies include eating and complaining that I have gained too much weight. Okay. Well done. Good. Same for me. Same. And I think we all have this problem. So my hobbies include eating and non-stop complaining that I've gained too much weight. Yes, okay. And this one is nice. This one, my hobby is sleeping. Yeah. Okay. But this one, I don't understand that much. Oh, this is for badminton. Okay. Just love it. All right. Yeah, that was nice, but I just love it. I'm not a pro. So this can be, Aman, why don't you try reading this one? Yes, ma'am. I'm not a pro. I just love it. Yeah. So I'm not a pro, but I just love it. Yes, ma'am. So that's how it goes.
And this one, the first one, I think we all can relate to it. Somebody wants to, Devjit, why don't you tell me about this? Make it funny. So mobile phones are my lifeline. Okay. Good, good. Very nice. Yeah, you've got it. So now make it more funny. Okay, I live on my mobile phone. I can't live without my mobile phone. Yeah, something like that. I really can't live without my mobile phone. Yeah, yeah, very true. Very true. Well done. Well done. Very nice. That was great, guys. That was really nice. So so this week, what you need to really, like you're saying, whenever you're speaking with somebody or even, on the phone, last time, like I had said, that try and read aloud. That really helps bringing in that, intonation, upper, niche, kaise voice ko karna. Even if you're just reading a newspaper article, try and, read it aloud, right? And then when you're speaking with your friends or with whoever you want to practice with, try and now make it more exaggerated. Thoda sa zyada drama. Right? So usse kya hai, dheere dheere, you will start getting more feeling into your sentences. Yes? And what I would like, and maybe Rachna ma'am can add into this, is that, I would like you to write about how your weekend was. So we all spoke during the weekdays, what you do. You have classes, you're studying, you're doing this, you're doing that. But during the weekend, how do you spend your time? So just write a little paragraph about it. And then you can read it out. So throw in some humor, throw in some drama into it. So just exaggerate it a little bit so that we can all have a nice laugh about it. Not just that I wake up and I go to bed and I ate this, but make it a little bit, take it a little one step beyond. Okay? So can you all, it doesn't have to be too big, just a paragraph, but practice. And when you speak it out to all of us, when we hear about it, so it has to be with full expressions. What do you all think? You think you can do that for me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. It sounds fun. Yes, Okay, ma'am. that's I can do Lily, that. can you please stop sharing so then I can even say something to them? Absolutely, absolutely. So आज का क्लास आप लोगों को कैसे लगा, जहाँ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे रीड करते हैं, कैसे बोलते हैं? What did you all think of today's session? It was fun. It was fun. Okay. More than Yeah, really enjoyed it. Okay. Yes, ma'am. It was more fun. Okay, good. I'm glad you enjoyed, and please do the homework. And I shall see you all on next Monday. Yeah. I will be there. Thank you. I'm glad you all are enjoying it. And yeah, do tell, I mean, if there's anything particular, you want to both Rachna ma'am and me to, help you with, like this is where we need help or some more, then please feel free to let me know. And I can, the next class, we can include that as well. Yeah. So much. I'm so glad you all enjoyed. Thank you so much, Manali. Thank you. My pleasure. My pleasure. Absolutely enjoying it. Thank you so much, everyone. Bye. Thank you, ma'am. Bye-bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. इसको क्वेश्चन आंसर्स मेरे लिए है, रुक जाओ थोड़ी देर, मैम एग्जिट करेंगे, आई विल रिप्लाई. All right. Okay. Thank you. Bye. You're welcome. Okay, so I think Kshitij, you had a question. क्या लिखा था, कहाँ गया chat? And that's Krish, Okay, not me. sometimes, oh sorry, Krish. Sometimes I get involved in back answering an argument. So this is too random. Tell me, who do you argue with and what do you argue about? Krish is not here anymore. वाह भाई वाह, क्वेश्चन पूछ के चले गए. Yes, I heard that. Jai Hind, Jai Maharashtra. Okay. Arai, you had a question for me. And Deepu Bania, you wrote a question. How I can register for this class? Okay. So what has happened? So this class has started almost like अभी कितना टाइम होगा, 3 महीना होने आएगा ना 2 क्लासेस के बाद. I think we have done Yes, ma'am. It's going to be 3 months now. Yeah. So the thing is,
वो रजिस्ट्रेशन हो गया है और ये स्टूडेंट्स के साथ हम पहले प्रैक्टिस करते हैं, बट एवरी मंडे आई डू पोस्ट द लिंक हियर। तो अगर से आप लोगों को ज्वाइन करना है, आप जूम पे आ सकते हो, यहाँ पे सुन सकते हो, और अगर से हमारे पास टाइम होगा तो हम आपको भी प्रैक्टिस कराएंगे, बिकॉज इंग्लिश, कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश इज ऑल अबाउट practice, practice, practice. And for the next class, I don't know when I'm going to launch it. I know it's not this year because already I am overworked with counseling, doing these professional sessions, plus it's been crazy, okay? Plus I'm studying also on the side. So मुझे लगता है कहीं तो भी जैन में नया सेशन स्टार्ट करेंगे of these basic English, and we are also trying to do advanced class for this particular batch. So इफ आई हैड नोन कि इतने लोगों को इंटरेस्ट है ना, मैं पहले से ही एक्चुअली यूट्यूब पे लाइव जाती, मुझे नहीं पता था कि इतने लोग मुझसे ये पूछेंगे कि कैसे रजिस्टर करना है, बट एक्चुअली यू नॉट लॉस्ट अ लॉट ऑफ दिस थिंग, बिकॉज हम एवरी मंथ एक नया मॉड्यूल करते हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट, जितना हो रहा है उतना प्रैक्टिस करो। और अगर से कभी होमवर्क चाहिए, जो आज तो हमने कुछ खास होमवर्क नहीं दिया है, पर आप भी कोशिश कीजिए। हम अनफॉर्चुनेटली सबकी सबमिशंस नहीं लेंगे, because it's very tiring. We all have our own work. Some like Nalini ma'am also works and I work also. Plus we have our families. So maybe हम besides ये बच्चों का correction आप लोगों का नहीं ले पाएंगे, but at least you're doing something, right? It's like, and I always, whoever's new here, make sure Cake app download करके every day minimum 30 minutes वो जो spoken conversational English सिखाते हैं, it's very important कि वो जो बोल रहे हैं फिर से बोलो और सीख लो, ठीक है? एंड जो आज हमने सिखाया लास्ट वीक, मैंने उनको ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, यू कैन गूगल इट, यू विल फाइंड द लिंक, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेकिंग कॉन्वर्सेशन, ओके? एंड आई डोंट थिंक आरा यू आर हियर, यू वांटेड टू डू अ क्वेश्चन आंसर, आई डोंट नो तुम कहाँ हो, बट आई कैन नॉट वेट एनी लॉन्गर, बच्चों को भी जाना। यहाँ पे किसी को मेरे को क्वेश्चन कुछ पूछना है? जैसे एक स्मॉल, यस बोलो बेटा। मैम एक्चुअली जैसे हम भी जब भी कॉन्वर्सेशन करते हैं तो आई कांटेक्ट बनाना होता है, बट यू कांट व्हाट? नहीं, गुड कॉन्वर्सेशन के लिए मतलब रेकमेंड करते हैं कि आई कांटेक्ट बनाओ, बट मैं जब भी बनाता तो मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता है। कहाँ पे, फ्रेंड्स के साथ कि आप यहाँ पे बोल रहे हो? नहीं, एज अ प्रोफेशनल किसी से भी अगर मैं बात कर रहा हूँ। So you cannot talk much. You're saying your conversation is like close-ended कि 2-3 लाइन बोल दिया खत्म हो गया, ये बोलने की कोशिश कर रहे हो? नहीं मतलब करता हूँ, बट आई डू फील अनईजी कि आई डू हैव टू साउंड प्रोफेशनल एंड हैव टू लाइक give them a good impression of me, so that feels very weird to me. Okay. And how old are you? I'm 20. यार जब मैं 20 साल की थी ऐसा नहीं बात करती थी, trust me. The problem with today's generation is you want to like fly before you even learn to run, okay? You can't walk, you can't run, तुमको सीधा उड़ान भरनी है. Please understand, with experience, with age, we get better at what we say, how we say it, and to make these impromptu kind of conversations, okay? So first, सबसे पहले मैं आपके मेन इशू को एड्रेस करूंगी. आई थिंक ऑल ऑफ यू ऑल हैव दिस थिंग समवेयर दैट यू आर नॉट गुड इनफ. ये सेल्फ वर्थ से आती है, और मेरा जो सेल्फ वर्थ का सेशन है, आई थिंक 1.5 हफ्ते में, 1 हफ्ते में आ जाना चाहिए. एडिटिंग ऑलमोस्ट हो गई है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर ऑल यू चिल्ड्रन टू लर्न, बिकॉज तुम्हारे सेल्फ वर्थ में जब कमी होती है, जब आप लोग अपने आप को वैल्यू नहीं देते इनफ, तो वो अंदर से, वो तुम्हारे अंदर से वो एक आवाज आती है, एम आई गुड इनफ, एम आई डूइंग इट राइट, व्हाट इफ आई से दिस? सो दैट नीड्स टू बी फिक्स्ड, ओके? Once you fix that, things get better, because then you don't constantly compare yourself. Because ये क्या हो रहा है ना, तुम दूसरों को भी देखते हो, और कुछ लोग, yes, some people I remember even in like कुछ लोग हमारे स्कूल में हैंडराइटिंग कंपटीशन होता था, ठीक है? तो एक लड़की हमेशा हर साल जीतती थी, हर साल. हम लोग ने तो गिव अप मार दिया था, हम लोग क्यों हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ओके? सो सम आर innately born with that, either the writing or the speaking skills. They're better orators than us, but it's not something that we cannot learn, ठीक है? अगर से हम प्रैक्टिस करेंगे, स्पेशली ये स्किल इज इजीली हम कर सकते हैं, अगर से हो सके तो. दिस इज तो कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश में कर रही हूँ. आई एम प्लानिंग समथिंग न्यू फॉर होपफुली फेब में होगा, where it will be all about confidence and conversation. I'll get different speakers for per week so that you people can understand how did we learn.
today you're comparing yourself with maybe somebody who's got a better experience. It also matters कि आप किस, जैसे मेरे पेरेंट्स यूज्ड टू ओनली स्पीक इंग्लिश, ओके, और हिंदी मराठी, सो देयरफॉर माय इंग्लिश वाज ऑलवेज माय स्ट्रेंथ, ओके, मे बी अराउंड यू, एक तो वो इशू होगा, और पेरेंट्स आपके कैसे हैं, लर्नड बिहेवियर होता है बहुत कुछ, लाइक माय फादर वाज अ वेरी वाज लाइक एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन, ही कुड टॉक टू एनीबॉडी, ओके, सो दैट्स हाउ आई पिक्ड इट अप, ओके, सो समटाइम्स इट मैटर्स कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, पर अगर से वो, obviously we can't change that, right? Some things we are like, it's going to happen that our parents might not be the best orators or best at, you know, kind of making this kind of fluid conversation and just going with the flow. So it comes with practice. आप बहुत young हो, first and foremost, stop expecting yourself to be perfect. Second of all, practice will make you better. Nothing, there is no such thing as perfectionism. जो लोग perfection के पीछे भागते हैं हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है करके यार I'm still not there. I'm still not there. Every time you do that, you're going to have a problem. Like last time I was at a session, I don't know, कौन से professional के साथ, I fumbled on a certain word, which I said daily. I think it was organically. Okay, I think, I don't know which session it was. And I say it so often, but I could not say it at that time, you know. And I was like, क्या था वो word? और मैं 10 बार तो उसको repeat करी थी, मुझसे नहीं, 10 बार ज़्यादा हो गया, but चलो जितने बार भी. So even someone like me who speaks every day almost to every other person, I also fumble. So first and foremost, learn to not feel so uncomfortable with your so-called mistakes. Okay? जब हम लोग बहुत uncomfortable feel करते हैं ना, यार लोग क्या सोचेंगे, मैंने ऐसे बोल दिया, अरे ये क्या हो, यहाँ सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम वहां थी, एक self worth और एक being too critical about ourselves. Laugh it off. Say okay, मैंने कर लिया, big shit, I'm human being, मैं नहीं करूंगा तो क्या कुत्ता करेगा, कुत्ता तो बात भी नहीं करता, ठीक है, तो like laugh it off, let it go. I'm sure today's session, even the teachers make mistakes, okay, so it is completely normal. And the other thing is, आजकल तो हमारे जमाने में तो साला गूगल भी नहीं था, आप लोगों के जमाने में अभी गूगल है. Go Google, look up articles, look up things that you can learn, how to make a conversation, what questions to ask, okay. The more you practice, ये उतना discomfort आपका जाएगा. जैसे अभी किसने, क्षितिज ने बोला कि किसने, अमन ने बोला कि मैं डिस्कॉर्ड पे प्रैक्टिस करता है, किसने बोला. Yes, I said that. हाँ, so then you also have to do that. Till you don't practice, you will not know. हमारे जमाने में ना डिस्कॉर्ड था ना कुछ था, हम बस मर के खुद सीखते गए, ठीक है. हमारे पास ये सब एप्स नहीं थे कि सुनो उसको रिपीट करो. आजकल you have the world at your disposal. And also, जो मैं कह रही थी पब्लिक स्पीकिंग क्लास, even though I'm starting something, I would not call myself like see, even I know my limitations. It's very important to know your limitations. अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ करके वो जो क्लास होगी, I'm not very sure that would be considered as a public speaking class, okay? तो आप एक काम करना कि अगर से you can afford it, make sure कि आप public speaking class join करो. It helps you come out of your shell. It gets you into that uncomfortable zone to get you back like, okay, I can do this. I can make conversation with anybody. And I got that even for my son who's 10 and he was having some issues. And I said, ठीक है, जल्दी start करते हैं. अभी it's never too late. I feel जैसे आप swimming कभी भी सीख सकते हो, driving कभी भी सीख सकते हो, cycling कभी, ये भी एक skill है, आप कभी भी सीख सकते हो. कभी ऐसे अपने आप को ये नहीं सोचना है यार मेरी ये उम्र हो गई अभी तक मेरे को नहीं आता. मैं अभी 50 के साल में पढ़ भी रही हूँ, ठीक है, हाँ थोड़ा मुश्किल होता है, but I'm learning, I'm studying. I don't ever tell myself, I feel it's knowledge is never wasted and knowledge is amazing to get at any age. Okay, Adarsh, so just make sure कि आप practice करो. Have I left out anything that you would like to know? No, ma'am. अरे यार हर्षवर्धन, मैंने कब बोला श्वेताब के साथ मैंने कोलैबोरेट किया था, जो 5 सितंबर को किया, ठीक है, वो आने वाला है सेशन. वो अभी तक एडिटिंग रूम में ही बेचारा मेरा मृदु थक गया होगा एडिटिंग कर करके. 4 घंटे थे पता है उस सेशन के. तो ट्रस्ट मी, आई मीन मेरे पूरे 4 घंटे नहीं थे, मेरे आई थिंक एक 1.5 घंटा मैक्स टू मैक्स हो, ठीक है. एंड श्वेताब का चैनल है ना, वहाँ जाओ ना, श्वेताब उधर ही है, अभी भी उसने कुछ किया था. तो मेरे इधर अलग चीजें हो रही है, ठीक है. आई एम मोर लाइक अ लर्निंग यूट्यूब चैनल ऑफ सॉर्ट्स. ओके, गुड इवनिंग केविन. अच्छा, बहुत जल्दी आ रहे हैं आप लोग. सो दीपू, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन. एंड किसी को और कोई क्वेश्चन है कि मैं चलूं? अच्छा, तो हम चलते हैं.
ये पता है क्या होता है ये चैट का, जब तक मैं जाने के लिए आती हूँ ना, बाद में 2-3 सेंटेंसेस आते हैं, फिर मैं आई एम लाइक आई एम वेटिंग कि शायद कोई कुछ पूछे. केविन, मे आई एग्जिट द चैट? पता नहीं हर्षवर्धन अपने ही धुन में. अच्छा, तुम लोग को यहाँ पे किसी को क्वेश्चन नहीं है ना, तुम लोग जाओ, ठीक है? No, डोंट वरी, Bye, मैम ma'am. कैन हैंडल द यूथ. thank you, ma'am. बाय. Thank you, ma'am. Thank you so much. दो तीन सेंटेंसेस आते हैं, फिर मैं आई एम लाइक ओके. इंग्लिश वर्सेस आ गया. ये कौन है? इंग्लिश वर्सेस हिंदी में अपना दिमाग मत खराब करना. इंग्लिश इज अ स्किल. एग्जैक्टली इवान, दैट्स व्हाट आई जस्ट सेड दैट लाइक मेनी टाइम्स ओवर. आज मेरी आंखें लाल क्यों है पता नहीं. तो हाँ, तो आई एम जस्ट सेइंग कि यार पढ़ो ना यार. अगर से यूज हो रहा है तो ये आर्ग्यूमेंट करके क्या होगा कि इंग्लिश बेटर है, हिंदी बेटर है, संस्कृत बेटर है, हम ये कर पाए, हम वो कर पाए. यार वी आर सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड. जो लैंग्वेज चल रही है सीख लो. एक दिन इंग्लिश नहीं होगी, कुछ और होगा, तो वो सीख लेना. Why do you have to get so carried away with this kind of English Hindi debate? यार नेशनल लैंग्वेज नहीं है, आचार डालेंगे. पहले तो नेशनल, फॉरगेट नेशनल लैंग्वेज, तुम लोग पहले यूनिटी तो लाओ इंडिया में, ठीक है? सब लोग अपना अपना सोच रहे हैं, एकदम वाट लगा के रखिए कंट्री की, आए बड़े नेशनल लैंग्वेज सिखाने के लिए. पहले अपना दिमाग ठीक करो, इंडिया के लिए कुछ करो. फॉरगेट ऑल दीज, ये सब फालतू के मुद्दे मत उठाओ. इतने गरीब है, इतने सारे लोग हैं हु नीड आवर हेल्प. जो भी, जिस तरह भी आप किसी का मदद कर सकते हो. जैसे आई एम लिविंग हियर इन जकार्ता, तुम लोग वहीं रह रहे हो, राइट? आप लोग भी कुछ कर सकते हो. स्टॉप लाइक ऑल दीज भोजपुरी. डिड आई से भोजपुरी? व्हाट, आई डोंट नो व्हिच पार्ट ऑफ. हाँ, भोजपुरी आएगा, प्लीज रहने दे. हाँ ठीक, आई डाउट इट, बट ठीक है, आ जाएगा तो हम भी. हम, आई डोंट नो हाउ टू स्पीक भोजपुरी. कोई लाइन आती है क्या? I don't know, I only know those songs. Okay. अच्छा, अब मैं चलूँ? जो YouTube पे है, मैं बाय बोलो ना मैम को, तो मुझे समझ में नहीं आता मैं जाऊँ कि रुक जाऊँ. Say bye, say good night, so I kind of get a hint that ma'am, you are allowed to leave. Allowed, वैसे तो मैं आप लोगों को परमिशन नहीं मांग रही, बट यू नो आई एम वेरी पोलाइट वैसे. अनलेस मेरा कोई दिमाग खाता है तो फिर मैं थोड़ी अपसेट हो जाती हूँ. और किसी ने पूछा था कि मैम अपने बारे में बताओ, वो बंदा भी चला गया. कौन था वो, भूल गई. किसी ने पूछा था, आई डोंट नो, आई लॉस्ट दैट चैट. यार ये ना चैट इतनी लंबी, आई मीन सॉरी, ये सेशन इतना लंबा चलेगा, वो इंसान सोचता होगा कि यू नो देयर इज समथिंग. ओके बाय. शताब इज फ्रॉम लखनऊ. यस, आई एम अवेयर वेयर ही इज फ्रॉम. व्हाट इज भोजपुरी गॉट टू डू विद लखनऊ? बट ही लिव्स इन स्वीडन बाय द वे, और समवेयर. या मैं हमेशा एंड में जॉइन करता. हिमांशु, तुमने कुछ क्वेश्चन पूछा था ना? चलो टाटा मैम. जवाब चाहिए क्या? क्या तुमको, जब तुमने लिखा कि नहीं, तू हिमांशु, तुमने पूछा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, जब आप जाने का टाइम होता है. अरे मैं हूँ ना, अभी तो बात कर रही हूँ. यू आस्क्ड मी टू टेल यू अबाउट माई सेल्फ. डू यू मीन माई पर्सनल लाइफ और माई प्रोफेशनल लाइफ? व्हाट डू यू वांट टू नो? एंड विच पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड व्हाट इज योर क्वेश्चन? ये तो बहुत बड़ा, लाइक ऐसे ही, मैम टेल मी अबाउट योर सेल्फ, लाइक कितना कुछ है बोलने के लिए. मेरी हाइट, मुझे क्या खाने में अच्छा लगता है, और मैं दिन कैसे बिताती हूँ. there's so much to know, right? So tell me, what part of my life would you like to know about? Unless it's very personal, then I will not reply. Yeah. अरे हिमांशु, सो गया क्या तू? प्लीज क्वेश्चन थोड़ा फास्ट टाइप कर, अगर से टाइप भी कर रहा है तो. 9 लोग चैट ज्वाइन किया है, पर 9 लोग से मुझे ताक रहे हैं. हाँ, ओके. नो मैम, आई वाज आस्किंग. ओ नलिनी मैम. नलिनी मैम इज लिविंग इन जकार्ता. शी इज, I won't say we are close friends, we know each other, and that's about it. I know. Okay. And Nalini ma'am is just helping me, and there are lots of other ma'ams who are going to help me with this program. I also don't know. She works, I know, but I'm not very sure क्या. पर जकार्ता में वो काम करते हैं. So we are not friends as in कि I know. तुमको क्या आचार डालने हैं ये जानने के बाद, ठीक है? हाय हिमांशु, तुम क्या कर लोगे उनके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जान के? उनको जॉब ऑफर कर रहे हो?
अच्छा, ये क्या हर्षवर्धन ने क्या लिखा? मैम, इंडिया में प्रोफेशनल जॉब्स के पीछे लोग पागल है, जबकि फॉरेन कंट्रीज में ऐसा नहीं है क्या? सब लोग तो प्रोफेशनल जॉब कर रहे हैं, तो मतलब क्या? यहाँ इंडोनेशिया में भी सब लोग जॉब्स ही कर रहे हैं। तुम आई एम नॉट वेरी श्योर व्हाट डू यू मीन। आर यू ट्राइंग टू से कि इंडियंस बाहर गांव जाके काम करना चाहते हैं? आर यू ट्राइंग टू से दैट? हाँ, एक तो मनी। अच्छा अच्छा, सोशल नॉर्मेटिव रियलिटी वेयर दे टीच यू टू रिस्पेक्ट इज ओनली गिवन दोज हू पीपल हु हैव अ प्रोफेशनल जॉब। अरे क्या बोल रहे हो यार? मैं एवरी सेकंड पर्सन आई काउंसलिंग, दे आर लुकिंग फॉर अ गवर्नमेंट जॉब। मैम, वो कौन सा गवर्नमेंट जॉब का कौन सा एग्जामिनेशन होता है जो देते हैं? व्हाट आर यू सेइंग? इन इंडिया प्रोफेशनल जॉब्स कहाँ है? सब गवर्नमेंट जॉब के पीछे पागल हो रहे हैं, और लड़कियां भी जो शादी करती हैं ये देखती हैं कि लड़के के पास गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं। हाय श्रेयस, क्या? What are you saying? Where are you living? Which part of India that you're saying that the professional job? And क्या फर्क पड़ता है? प्रोफेशनल जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, जॉब जॉब होती है यार। कर लो जो करना है, जस्ट खुश रहो जब तुमको करना है। अगर से तुम ये बोल रहे हो कि इंडियंस इंडिया छोड़ के अब्रॉड जा रहे, वो अलग ही मैटर है, ठीक है? एंड ईच वन टू देयर ओन। आई नो दैट व्हाई आई मूव्ड एंड व्हाई आई लाइक इट हियर, सो या यूपीएससी, या ऑल दोस। पता नहीं नीट जी जेई क्या होता है। मैं एक तो इंडिया के बाहर रहती हूँ, तो मुझे पता भी नहीं करके व्हाट आर दी। बट मेरे मैक्सिमम बच्चे यही आते हैं, मैम लाइक वी ट्राइंग बट वी आर नॉट मेकिंग इट, या सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। ओके साकेत, थैंक यू फॉर योर दिस थिंग। और कोई क्वेश्चंस पूछना है आपको? मैं चलूँ? Just wanted to thank you, ma'am, for your various perspectives. And my pleasure, Anindya Roy. I am glad that you like my perspective. मेरा तो फंडा बड़ा क्लियर है, मेरे पास तो फिल्टर नाम की चीज़ है नहीं, मैं कुछ भी बोल देती हूँ। तो कभी कभी सोच के बोलना पड़ता है, लाइक एज एन आई एम वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है? इफ आई एम अपसेट देन आई एम अपसेट, इफ आई एम like happy, I'm very happy. So like my face can, like you will tell the day I am upset, मेरे फेस पे आपको नजर आएगा। छुपा लो, क्या छुपा लो? ये आ गया क्या मोहम्मद इरिटेट करने को? क्यों गाली खाना चाहता है मेरे से? आई होप, आई एम श्योर तेरी फेक आईडी होगी, क्योंकि हिम्मत होता है तो मेरे में तुझे मेरा इंस्टा आईडी देते, मेरे को अभी कॉल करके बताइए ऐसे, ठीक है? यू आर वेलकम हिमांशु। साकेत, आई एम हैप्पी चैट, ओके, आई एम ग्लैड। मोहम्मद, मेरे से गाली मत खा। तुमको मालूम नहीं ये जो स्वीट फेस के पीछे कितनी गालियां छुपी है। ट्रस्ट मी, मैं गंदी सी गंदी गाली दे दूंगी तुमको ऑनलाइन, मुझे तो डर भी नहीं लगता। तुझे हिम्मत है तो ये जो चैट पे तुम लिखते हो ना, कल भी लिखा था कि आई एम हॉट, आज भी कुछ कचरा लिखा है, मैं तो आपको बैन कर सकती हूँ वैसे, ठीक है? बट मैं क्यों नहीं करती पता है? क्योंकि मुझे लगता है कि इफ आई डोंट शट द फक up with you people, if I don't tell you to fuck off and don't tell you to shut the fuck up। आज आप मेरे साथ ऑनलाइन कर रहे एक इंसान जो इतना काम करता है और इतना रिस्पेक्ट सोसाइटी में कमाया है, फिर भी आप मेरे सिर्फ कपड़ों को लेकर बकवास कर सकते हो। So then shows that kind of what kind of shithole you are from, right? क्योंकि आपको ये नजर नहीं आ रहा है कि मैम इतने लोगों को फ्री काउंसलिंग कर रही है, इतने प्रोफेशनल्स को लाती है, इंग्लिश फ्री सिखाती है, चैरिटी वर्क करती है, डिस्कॉर्ड चलाती है, इतना कुछ अच्छा काम करती हूँ, पर तुमको क्या नजर आता है? मैम हॉट है, ठीक है? तो वो तुम्हारी घटिया सोच का नतीजा है। तो अगर से हिम्मत है, कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टा, और ये मेरे को फोन पे बताना, फिर मैं देखती हूँ तुम्हें, ठीक है? और इवान क्या लिखा है? ध्रुविन फंडिंग कम होता है इंडिया की यूनिवर्सिटी में, सो रिसर्च और मैम ये सब फेक। हाँ एग्जैक्टली श्रेयस, नहीं पर श्रेयस, द रीजन आई डोंट इग्नोर दिस इज बिकॉज आई होप समवेयर ही विल लर्न। यू सी, ये आज मेरे साथ कर रहा है, कल किसी और लड़की के साथ करेगा, एक दिन तेरी भी बेटी होगी, पता है? कोई तेरी बेटी के साथ ऐसा बात करेगा, तो थोड़ा शर्म कर, ठीक है? Anyway, chalo guys, love you all except this chutia Mohammed. Sorry, I abused, but actually I'm not sorry. Fuck off. Yeah, ठीक है. Shivanshi, yes, tell me, Shivanshi, बच्चा, tell me. नहीं नहीं, उसको तो मैं उसने रिट्रैक्ट तो किया, चलो अच्छा है, शर्म आई थोड़ी मोहम्मद आपको कि आपने रिट्रैक्ट किया, थैंक यू सो मच।
आपको थोड़ी सी होपफुली भगवान ने मेरे थ्रू कोई जरूर तुम मेरे आई फील कि यू हैव कम टू दिस चैनल so that you will learn something that respect people's choices of food, religion, clothing. It doesn't matter what the fuck we wear. It's important तुम किस तरह के इंसान हो, और आप अगर से सच में उस कौम के हो, then आप लोगों में तो इतना वही बिलीव करते हैं ना कि दिल से अच्छा होना चाहिए एक इंसान. It doesn't, you have to show your goodness. आप लोग क्या 10% आपका देते हो सैलरी का लोगों को as charity? Look at the amount of charity I do. So look at the person, what the person is doing, not what the exterior. ये सब चला जाएगा एक दिन, रह जाएगा तो मेरी लेगेसी रह जाएगी कि मैंने क्या क्या नहीं क्या क्या किया, you know, for the society. Okay, हर्षवर्धन, टाटा बेटा, तू 2 बार टाटा बोला है, तू अभी तक इधर है, तू जा. Okay, there are certain percentage of every population. हाँ बेटा वो है, but I would like to like correct them. If we don't, they will never learn. Yeah. Okay, I will be doing BSc, but I want to do MBBS. Okay. Shivasi was just want to say bye. नहीं वो तो कुछ लिख रही है, हाय लिबिडो मोहम्मद है. ओके मैम, प्रखर के साथ पॉडकास्ट. तुम लोग प्रखर को बोलो ना रचना मैम को कांटेक्ट करे, मुझे क्यों बोल रहे हो? ओके अरे हर्षवर्धन छोड़ो ना यार. तो हाँ शिवाशी, शिवांशी, आई डिडंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन. आई विल बी डूइंग बीएससी बट आई वांट टू डू बी. अरे मैं करियर काउंसलर नहीं हूँ. करियर काउंसलिंग के लिए डिस्कॉर्ड पे आओ, मेरा लिंक बायो में है, और उधर लिंक ट्री क्लिक करो, इट विल टेक यू टू माय डिस्कॉर्ड. देयर वैभव इज देयर हु इज गिविंग करियर काउंसलिंग. ठीक है, ये वाले उनको बोलते ना, मैम मुझे लड़कियों से बात करने में नर्वस काहे, क्यों? वो भी तो इंसान है आपकी तरह. कौन से वो लोग कोई भगवान है? दिस इज द प्रॉब्लम विथ यू गाइज. यू नो, यू गिवन पुट देम अप ऑन दिस ब्लडी पेडेस्टल. यू नो, डोंट डू दैट. दे आर जस्ट एज ह्यूमन एज यू आर. जैसे किडनी, लिवर, आंख, नाक सब सेम. सोते भी वो है, जागते भी हैं, टॉयलेट भी जाते हैं, खाना भी खाते हैं. तो एक तो उन लोगों से डरना बंद करो. दे आर जस्ट लाइक यू एंड मी. ओके. And second, practice will help you just like any other conversation, whether it's in professional life or personal life. And yes, there are some articles which I sent to my maybe, you know, the ones where they say how to approach girls without looking creepy. Trust me, if you're a good person, you are kind, you're caring, you will get more people to like you. Even if this particular girl doesn't like you or something, don't try to be too desperate. Desperation shows, like I had some few clients who were like, मैम ये लड़की नहीं मिली, मैम उधर नहीं, उसने ना बोला, उसने भी ना बोला. It's okay. Stop attaching your value to these girls. They are not that important. Start valuing yourself. It's very important. Okay. Prakhar, Shweta, Chetan, Bhagat and Rachna. Yeah, that would be quite a conversation. वो 3 लड़कों के बीच में मैं like ऐसे सोचती हूँ, अच्छा when am I supposed to speak? मुझे चांस ही नहीं मिलेगा बात करने का, to be very honest with you. Okay, मैम so आ रहा है, प्लीज मेक श्योर कि आप कॉन्वर्सेशन करो और डोंट ओवर रिएक्ट एंड डोंट एग्जैजरेट देयर सो कॉल्ड वर्थ. ओके, यू आर वैल्यूबल, प्राइसलेस, जस्ट लाइक दे आर. वी ऑल हैव आवर प्लसेस. एंड जितना प्रैक्टिस करो, और वैसे भी जितना जल्दी आप रिलेशनशिप में पढ़ोगे ना, अनलेस यू आर रेडी, ट्रस्ट मी, हार्ट ब्रेक इज नॉट इजी टू हैंडल. ठीक है. Maddie rocks. Huge fan of my work. If you're a fan of my work, then you should do something that I do. Make sure you help in the society in even this much. इतना सा 1% को please मदद करना. ठीक है? Then I will know that you're actually following. I don't want followers and fans. I want you all to do your little bit. यार बहुत shitty world है, especially India में इतना problem चल रहा है. I feel really bad. और मुझे शर्म, अरे काहे शर्म आती है? तू ट्राई नहीं करेगा तो कैसे निकलेगा इस शर्म से? शर्मा रहा है, शर्मने का नहीं है, ऐसे बोल देने का. ठीक है मैम, मुझे साइकोलॉजी करना, क्या करूँ, पढ़ाई करो, बट ये सोच के जाना कि उस करियर में इंडिया में अभी तक बहुत, अनलेस यू आर बिकमिंग लाइक अ साइकेट्रिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट, आपको थोड़ा कम, काउंसलर्स इतना पैसा नहीं कमाते, उन्हीं सिटीज में कमाते. और साइकेट्रिस्ट बनोगे फिर भी, तुम अगर से साइकेट्रिस्ट बन रहे हो तो प्लीज मेक श्योर कि आप काउंसलिंग जरूर कराओ. बहुत सारे साइकेट्रिस्ट ऐसा करते, मेडिसिन चिपका देते महीनों सालों. आज भी एक क्लाइंट आया था, वो कोई गांव, इट वाज नॉट लाइक अ प्रॉपर सिटी साइकेट्रिस्ट, तो वहाँ पे लाइक 40-50 लोग हैं, 4-10 लोगों को रूम में. अच्छा तो क्या प्रॉब्लम, अच्छा क्या प्रॉब्लम, अच्छा टक 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 प्रिस्क्रिप्शन.
अरे but if you don't sort out your root cause of your problem, if you don't talk about it, you don't get another perspective, you don't take counseling, how are you going to get better just by taking medication? Okay, you need an eclectic approach. So अगर से आप करना भी चाहते हो, make sure कि आप लोगों को counseling जरूर दे. और अगर से money is not of consequence and you don't think, then do it. I mean, yeah, it doesn't pay much in India. I don't know how much it pays because I live abroad. Okay. यार अभिनव 0 डिसलाइक्स तो होने चाहिए यार. मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है? मैंने थोड़ी तुम लोग को जबरदस्ती बोला कि मेरा सेशन देखो, इंग्लिश सीखो. एंड जिसको नहीं देखना जाओ, डिसलाइक क्या एक तो प्लीज शेयर करो यार. मेरा चैनल ग्रो ही नहीं हो रहा है. तुम लोग क्या कर रहे हो? कितने लोगों को मदद चाहिए? एक तो फ्री में कोई मदद करे, कुछ हेल्प तो करो, कुछ सपोर्ट करो. और मैम दे आर ऑल्सो ह्यूमंस एंड वी लर्न ग्रेजुअली. यस यशराज, एग्जैक्टली. और आरआई प्लीज शर्म करना बंद करो. और अनुज, आई होप आई रिप्लाई टू योर क्वेश्चन. मैम मुझे एक ब्राह्मण लड़की से प्यार हो गया है और वो बोल रही है मैं सिर्फ ब्राह्मण से करती बोलती है. तो आई एम गेसिंग तुम ब्राह्मण नहीं हो, ठीक है ना? करेक्ट. तो मतलब तुमको मालूम है कि कुछ ना होने वाला है, पर आपको भी मस्ती कम नहीं है ना. आप उसी के पीछे जाओगे जिसके साथ आपका रिलेशनशिप नहीं हो रहा, और वो सीधा सीधा आपको बोल रही है नहीं इंटरेस्टेड है. क्यों वहां पे बंजर जमीन में सीड और पानी डाल रहे हो जब कुछ फल फूल पौधा नहीं ग्रो होने वाला है? वाई? आपको मस्ती है, आपको पसंद आ गए, इसका मतलब क्या? सामने वाला भी तो आपको पसंद करना चाहिए. ऑफ कोर्स आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस बिकॉज हमारे घर में हर रिलीजन, हर कास्ट में, हर इंटरनेशनलिटी में लाइक पता नहीं सब लोगों ने अपनी अपनी शादी कर दी है. तो मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए बोल रही हूँ कि बी केयरफुल. ठीक है. So ma'am, this course for English speakers or anyone who wants to learn. No, it's for people who have basic English knowledge, and if you want to improve your fluency, that's what the class is for. ठीक है. And yeah, अभी मैं हिंदी में बोल रही हूँ because कितने सारे लोग इंग्लिश में हिंदी में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं मुझे. ठीक है. और आ रहा है, अगर से आपको छलांग मारनी है, कोई बता रहा है खाई सामने है, आपको फिर भी छलांग मारना है, क्या करें? अब कर ले. एक तरफा प्यार की ताकत भी अजीब होती है. Some shit like that, right? So yeah, go ahead and then come to me for counseling when your heart is broken. ठीक है. Okay, मैम आजकल दुनिया भर के बकवास भरी पड़ी है यूट्यूब पे जो बताते हैं गर्ल को कैसे इम्प्रेस करे. तो ये क्या वीडियो कुछ काम के होते हैं या फिर गर्ल के लिए नया प्रोसेस चाहिए होता है? हाँ, थोड़े बहुत हेल्प करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली most of you all, I don't know why you have such low self-worth, you know, and why do you all give them so much fucking importance? If they don't give you wow, fuck, you tell them fuck off. तुम लोग पता नहीं क्यों अपने आप को कम समझते हो. हाँ, arrogance अलग बात है. If you are going to be arrogant in front of a girl, she's not going to like you. वैसे भी 100 लड़के एक लड़की के पीछे भागते रहते हैं. तुम लोग को सबको हॉट लड़कियां ही चाहिए, किसी को रेगुलर. मैंने नहीं डिसाइड किया है कौन रेगुलर और कौन गुड लुकिंग है. स्टूपिड सोसाइटी ने डिसाइड किया. मैं तो आई डोंट इवन बिलीव इन दिस बुलशिट बिकॉज वी डोंट डिसाइड हाउ वी लुक, राइट? तो तुम लोग की भी मस्ती कम नहीं है. आप लोगों को भी कहाँ जो अच्छी अच्छी लड़कियां हैं उनको छोड़ के आप उन्हीं के पीछे जाओगे जिनके पीछे 1000 लोग ऑलरेडी लगे. तो गलती किसकी? तुम लोग की. ठीक है. होगा मैम, ग्रो होगा. हाँ, थैंक यू अनुज. ओके मैम, फेस योर फेयर, शेम एंड इनसिक्योरिटीज. तो जाना, प्रखर गुप्ता ने तेको समझा दिया है, तो कहा है तू मुझे फिर पूछ रहा है जब तू उधर सीख के आया है पर प्रैक्टिस नहीं कर रहा है. ठीक है. मैम हाउ टू गेट डिस्कॉर्ड लिंक? शिवांशी, गो टू माय इंस्टा. इट्स इवन हियर आई थिंक इन द डिस्क्रिप्शन. है कि नहीं बच्चे लोग? लिंक ट्री पे क्लिक करो. जैसे लिंक ट्री पे क्लिक करोगी सारे लिंक्स आएंगे, इंस्टा के, फेसबुक के, यूट्यूब के, भगवान जाने कितने. मैम विच फोन आई एम यूजिंग? आईफोन यूज कर रही है यार, सबसे पहले से आईफोन यूज कर रही. कुछ ग्रेट बात नहीं, मतलब लाइक पहले सबसे पहले नोकिया यूज किया क्योंकि नोकिया था इन 98 कब था नोकिया. फिर ब्लैकबेरी यूज किया. ठीक है. फिर ब्लैकबेरी बंद हो गया. मैं बहुत दुखी थी जिस दिन ब्लैकबेरी बंद, मेरे को बहुत अच्छा लगता था. फिर आया आईफोन. तो जब से मैं आईफोन आया है मैंने लाइक अब पहले वो स्टूपिडिटी थी. आईफोन ऐसा करता था कि आईफोन में बहुत सारे चेंजेस होते थे. जो बिगनिंग वाले फोन थे ना, बहुत डिफरेंसेस होते थे. अब तो उन लोग चूना लगाने का बिजनेस स्टार्ट कर दिया कि एक फोन और दूसरे फोन में लाइक हमारे सबके फोन्स लाइक 11, 12, 13 जो भी ऐसे पड़े रहते हैं, राइट? तो हम लोग लाइक यू कांट टेल, दिस नॉट लाइक मच ऑफ डिफरेंस.
कि स्क्रीन में सपोज ऐसा फ्लैट पड़ा है, अनलेस तुम थोड़ा बैक देख लो या उसके 2-3 कैमरास अटैच कर देंगे, 2-3 फीचर्स इधर उधर चेंज कर देंगे, शेप चेंज कर देंगे। हाँ, पहला वाला तो जल्दी टूट जाता था। तो उनका आई थिंक आ गया उनका टाइम कि वो उतना ही चेंजेस, जब स्टीव जॉब्स जिंदा थे आई थिंक ज्यादा प्रोग्रेस हो रहा था। ओके, कुछ लोग गिर के समझते हैं माय पापा 2000। हाँ, तो बोलते ना बादाम खाने से नहीं, धोखा खाने से अक्ल आती है। तो गिरने से भी देखो, जब साइकिल चलाते हैं, फर्स्ट टाइम जब चलाते हैं तो गिरते हैं, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फाइनली सीख जाते हैं। सेम विद लाइफ, घड़ी घड़ी गिरोगे, सीखोगे, खड़े हो जाओगे, थोड़ी सी चोट आएगी, आउच आउच करोगे, पर उस पर ज्यादा फोकस नहीं करने का, आगे बढ़ने का। ठीक है यार, मैं फ्लेक्सिंग नहीं कर रही, अभी मेरे को काहे गाली खाना चाहता है। अब क्या मैं ऐसा नहीं पढ़ सकती? ओके, इट लुक्स स्टूपिड। आई नोटिस्ड व्हेन आई वाज डूइंग दिस शिट इन श्वेताब का सेशन हो रहा था, मैक्सिमम टाइम आई वाज ऑन माय फोन, कोई ना कोई चैट आ रहा था एंड ऑल दैट। और क्योंकि मुझे नहीं पता था मैं कैमरा पे हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, क्योंकि मुझे लगा श्वेताब को स्पॉटलाइट किया है और जो पर्सन क्वेश्चन पूछ रहा है उसको स्पॉटलाइट किया, मुझे लगा स्पीकर व्यू पे। मैं तो थी भी नहीं, मुझे लगा, मैंने श्वेताब को जब इनवाइट किया था ये बड़ा क्लियर था कि फर्स्ट हाफ उसका होगा, सेकंड हाफ मेरा होगा। बट हम लोग मैं इतनी थक गई थी बाय द टाइम वो 1.5-2 घंटे चुप बैठ के, तो मुझे नहीं पता था मैं स्क्रीन पे हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं स्माइल किया, कि मैंने आई वाज, बिकॉज आई वाज लाइक ओके, क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है, और तो मेरे लिए तो नहीं था, वो बच्चों के लिए था जो क्वेश्चंस पूछ रहे थे। तो आई डिडंट नोटिस दैट आफ्टर इट वाज ब्लडी एडिटेड। आई एम लाइक, एक बार तो मैं खाते हुए नजर आ रही थी क्योंकि मुझे इतनी भूख लगी थी। तो आई हैड टू टेल माय टीम दैट प्लीज एटलीस्ट ये पार्ट काट दे यार, मैं सारा टाइम स्माइल कर रही हूँ, नीचे देख रही हूँ, तो इट लुक्स वेरी स्टूपिड। सो आई हैव टू होल्ड, एक तो नेक के लिए अच्छा नहीं होता, रिंकल्स होते हैं, डबल चिन होती है। ठीक है, और क्या है कि मैम इज यूजिंग वीवो 8 मुझे पता नहीं वीवो क्या है, ठीक है, मैंने कभी यूज नहीं किया। ओके, ओके, बाय हर्षवर्धन। कम यार, दूर से दिख रहा है ती कैमरा वाले, कटा हुआ एप्पल कटा, हाँ ये एप्पल देखो किधर है, बहुत हल्का नजर आता है, ये वाला गोल्ड वाले में कुछ नजर ही नहीं आता। अच्छा चलो, ओके, हो गया ना क्वेश्चंस, अब मैं चलूं? ठीक है, बाय गाइस, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। ये देखो, इंग्लिश सिखाते तो कोई नहीं आता, 19 लोग अभी आ गए। और तुम लोग भूल मत जाना, वेडनेसडे को इतना इम्पोर्टेंट सेशन है, इतने दिग्गज जो अपने फील्ड के अभिषेक कर आ रहे हैं, सो प्लीज बी देयर, प्लीज आस्क सम गुड क्वेश्चंस। आई डोंट नो हाउ मच टाइम ही हैज। एंड मैम, आपके पति का नाम क्या है? राजू, उनका नाम राजू, और मेरी बेटी का नाम सानिया है, मेरे बेटे का नाम आर्यन। ओके, how many times you come live in a month and what is schedule? Generally, Shivanshi, I don't have a particular schedule because I'm very new into the YouTube world. मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था मेरा YouTube चैनल होगा। बिफोर जून, आई थिंक अप्रैल में मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि श्वेताब ने मुझे बोला कि एक चैनल स्टार्ट करो क्योंकि मेरे फॉलोअर्स आपको फॉलो करेंगे। मुझे तो पता ही नहीं था ऐसा होता है। ठीक है, फिर जब बन गया चैनल और उसके फॉलोअर्स ने फॉलो किया, फिर नए फॉलोअर्स भी आए, बिकॉज इतने सारे गेस्ट के साथ जब आप सेशन करते हो तो और भी फॉलोअर्स आ जाते हैं। और फिर ऑब्वियसली जब तुम अच्छा काम करते हो तभी आते हैं ना, ऐसे नहीं करके ऐसे आ जाते हैं। तो देन आई रियलाइज व्हाट इज लैकिंग, देन इट स्ट्रक मी, ओ आई नीड टू हैव अ डिस्कॉर्ड, ताकि लोग जो लोनली फील कर रहे हैं, जो शेयर नहीं कर सकते, तो पहले वो स्टार्ट किया। फिर यूट्यूब पे फिर मैंने रियलाइज किया कि कितने स्टूडेंट्स हैं, उनको समझ में नहीं आता उनको क्या करना है लाइफ में, कितने सारे प्रोफेशंस के बारे में उनको कोई कोई जानकारी नहीं है, और सब इतना चार्ज करते हैं। चाहे वो इंटरव्यू स्किल्स, जैसे अभी Part-2 इंटरव्यू स्किल्स आने वाला है, मैंने अभी तक डिसाइड इसलिए नहीं किया कौन से डेट, मिड में होगा या एंड में होगा, क्योंकि एक गेस्ट जिनको इनवाइट किया है वो अभी तक डिसाइड कर रहे हैं 14th को आएंगे या 28th को आएंगे। तो उस पर डिपेंड करता है मेरा इंटरव्यू स्किल्स Part-2 कब आएगा। जब मैंने तुम लोग से बात करना स्टार्ट किया, मेरी काउंसलिंग 1 साल से चल ही रही थी बिफोर आई मेट श्वेता, और मैं एनजीओ के साथ काम कर रही थी। और देन आई सॉ देयर इज सच अ डर्थ ऑफ soft skills, communication skills, interview skills, goal setting, um, or even psychoeducational groups, how to overcome thinking, how to build your self-worth and self-esteem. तब मुझे realize हो कि oh damn, there is such a dearth on these topics, and कि आप लोगों को जब आप आते हो काउंसलिंग के लिए आते हो, नहीं भी आते हो, you people can watch. Then I included hypnotherapy audios because it's good for well-being, and trust me, जिन को थोड़े लो कॉन्फिडेंस इश्यूज हो रहे हैं, प्लीज लिसन टू इट, जस्ट
Believe me, it has scientific proof that it works. मेरे 4 ऑडियोज मुझे मालूम है और करने हैं, लाइक मेरे को एक ब्रेकअप पे करना है और एक ओवर थिंकिंग पे करना है, पर टाइम नहीं मिलता, पर मैं करूंगी. बट एटलीस्ट गो एंड डू दैट, इट विल रियली हेल्प यू गाइस. ओके ma'am, your choice is very soothing. I really admire your thought process. Thank you so much, Siddharth. Appreciate it. So Shivanshi, generally I do every Sunday. एवरी मंडे इज दिस प्रोग्रेसर्स, जो इंग्लिश सिखाने के लिए बच्चों को, क्योंकि जब लोग इतने मेरे पास आने लगे, मैम यू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, कैन यू प्लीज टीच अस, आई सेड हाउ कैन आई डू सो मच वर्क, हाउ इज इट पॉसिबल, राइट? सो आई सेड कि लेट मी गेट सम हेल्प, एंड दैट्स हाउ आई spread the word, and I'm so lucky so many people have accepted my offer and they want to help me. ओके मैम, फॉरेन में क्या कर रहे हो? एवरी गुड ब्रेन आर लिविंग इंडिया. बेटा मैं तो 30 साल पहले इंडिया छोड़ के चली गई थी, जब मेरे पास ब्रेन भी नहीं था. नहीं, ब्रेन था पर लाइक मैं 20 साल की थी जब मैं गई जंगल बुक. पता नहीं तुम हर्षवर्धन, पता नहीं कहाँ का तू आ जाता है और कुछ भी लिख देता है, कुछ कनेक्शन. ओके मैम, आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? सच्चरिता साईं की. मैं रोज रात को वो पढ़ती हूँ. Actually, I started to make short video on YouTube, but I feel awkward in making. Shivanshi, trust me, till you don't do it, you're going to feel awkward. Few times लगता है, तुमको पता नहीं मेरे को कितने टेक्स लगते हैं ये साले वीडियोस बनाने को. इतना जो लोग सोचते हैं ना कंटेंट बनाना इजी है, ट्रस्ट मी इतना इजी नहीं है. घड़ी घड़ी अपने आप को रिकॉर्ड करो विद द सेम काइंड ऑफ एक्साइटमेंट, और पसीने छूट रहे होते हैं जैसे अभी, और तुम्हारे लाइंस गलत हो जाते हैं, तुम्हारी फेशियल एक्सप्रेशन गलत हो जाती है. कितना मेहनत करना पड़ता है. करना है तो प्रैक्टिस करो, ठीक है? आई कैन नॉट इवन स्पीक इन फ्रंट ऑफ अदर्स लाइक पब्लिक स्पीकिंग. आई डोंट नो हाउ ओल्ड यू आर शिवांशी. कुणाल की राय के साथ आपको पॉडकास्ट देखा गया. आई एम डूइंग हाउ टू ओवरकम ब्रेकअप्स विद कुणाल. आई रियली लाइक हिज स्टाइल, एंड वो थोड़ा एक्चुअली वो बिजी नहीं है, मैं बिजी हूँ, सॉरी. मैंने उनको बोला है कि मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए, मे बी बिगनिंग जैन आई शुड डू दैट. या तो क्योंकि मैं इतने सारे साइको एजुकेशनल ग्रुप्स नहीं कर सकती. यू सी, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू बिल्ड द पीपीटी. वो प्रेजेंटेशन बनाने में आधी जान तो निकल उधर ही जाती है, पर ये वाला रेडी था, ठीक है? बट इफ अलोन आई स्पीक, इट इज गुड. यू हैव टू प्रैक्टिस, शिवांशी, यू हैव नो चॉइस बट टू प्रैक्टिस. एंड इफ यू कांट, देन जॉइन अ पब्लिक स्पीकिंग क्लास. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. और धीरे धीरे जितना ट्राई करोगे, एंड लर्न टू लव योरसेल्फ इन स्पाइट ऑफ व्हाटएवर मिस्टेक्स you make. Even there are certain videos, don't go after likes and numbers, okay? There are many things that I do. People are like, ma'am ये क्या कर रहे हो? I'm like, fuck you all. Like, करो, तुमको खुशी मिल रही है क्या, करो. आपके 50% ऑडियंस को अच्छा लगेगा, 50 को नहीं अच्छा लगेगा, या तो सिर्फ 10 को अच्छा लगेगा, पर तुम सिर्फ अपने लिए, पहले तो अपने लिए काम करना स्टार्ट करो. When you know that you're trying to do something, if you keep waiting for validation, approval कि यार ये इंसान लाइक करना चाहिए, वो नहीं, दैट इज द वर्स्ट थिंग. क्योंकि एक दिन आपको लाइक करेंगे, दूसरे दिन नहीं करेंगे, फिर क्या आप छोड़ दोगे करना? नहीं. जैसे मैं अपना काम करती हूँ बिकॉज इट गिव मी सेटिस्फैक्शन, दैट आई फील दैट देयर इज सम पर्पस आई हैव. व्हाट इज योर पर्पस? डू इट बिकॉज ऑफ दैट, नॉट बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट सब्सक्राइबर्स. ये किसी के नहीं होते, सॉरी, बट आई एम श्योर कुछ लोग मेरे हैं. बट आई एम जस्ट सेइंग, fame is fleeting. Don't do because of that. Do because it makes a difference to you, or maybe even one person. मैं हमेशा जब भी कुछ पोस्ट करते हैं, I said one person might need it. That's it. Don't look for more. जिस दिन तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैंने इतना किया ना, और उस 1% में भी 100% मत ढूंढो. 1% अगर से 1% को अच्छा लगा, मे बी उसको सिर्फ 50% हो जाएगा या 20%, उसमें भी खुश. When you are happy with very little, you will do fine and you will be successful in life. Contentment is key. अगर से सारा टाइम आपको लगा रहेगा ना कि मैंने अच्छा नहीं किया, अरे इसने पसंद नहीं किया, validation seeking is disastrous. Okay, it leads to nowhere. Yeah, it's very human, but it's very dangerous. Okay, hello ma'am, hello Shwetab Gangwar viewer. Shwetab in chat, yeah, right. Why? मैम कबीर सिंह देखा है? हाँ, मैंने पार्टली देखा, मुझे गुस्सा आया तो मैंने नहीं देखा. आई लिव इन जकार्ता अभिनव. मैम इंडिया आने के मन, रोज एवरी ईयर आती हूँ, सिर्फ कोविड के वजह से नहीं आई. अब मैं जान में प्लान कर रही हूँ. पहले मैं दिसंबर में आने वाली थी, अब वो चेंज हो गया बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस. सो आई विल ट्राई टू कम इन. मैं तो नहीं रह सकती यार, मेरे को मेरा कंट्री अच्छा लगता है, पर लाइक मेरी फैमिली भी वहाँ है. मेरी मॉम रहती है इंडिया में, और मेरे एक्सटेंडेड फैमिली बहुत है वहाँ पे. मेरी सिस्टर इन लॉज, मेरी सिस्टर, मेरे भाई.
सो काफी फैमिली है, तो हम लोग एवरी ईयर रियूनियन करते हैं। मुझे गर्मी कितनी हो रही, मेरे बाल पूरे सिक हो रहे, तो हाँ, तो हम लोग रियूनियन के लिए मिलते थे, बट ये साल हम लोग नहीं मिल पा रहे, तो मे भी जाने, तो मैं देखूंगी। I will maybe announce it, maybe I'll not announce it. I'm not very sure where I'll be. Ma'am, extramarital affairs and its psychology, please make a video. बेटा हर चीज पे वीडियो नहीं बन सकते, इट्स वेरी डिफिकल्ट। क्वेश्चन पूछ लो। मैम बाय 1 घंटे से बाय बोल अरे हर्षद तू जाना, मैंने कब तुझे रोका है। ओके, अब मैं चलूं, हो गया। श्वेता गंगवर व्यूअर, खुद का नाम क्या हो गया? दिल्ली में मीटअप होना चाहिए। ठीक है श्रेयस, देयर इज इवन ईशांक विच हु आई वांट टू मीट, ही वाज पार्ट ऑफ माय डिस्कॉर्ड टीम। मेरे को बहुत लगा हुआ उस बच्चे से। सो या आई माइट अनाउंस इफ आई कम टू दिल्ली, बट आई एम नॉट वेरी श्योर मैं कहाँ आऊंगी। आई एम राइटिंग अ स्टोरी ऑन इट। ऑन व्हाट मैम? अच्छा हाँ, यू आर राइटिंग अ स्टोरी ऑन इट। So if you're writing a story, why do you need my point of view? Unless you're dedicating a chapter to me and saying कि रचना मैम ने ऐसा कुछ कहा, अब तब या तो उधर like credit होना चाहिए या तो call me, I'll talk to you about it. Then you can write. I'll not going to sit and make a video on it. Okay, bye Abhinav. Mohammed, thank you so much. Namaste. Thank you for changing your views and being respectful towards me. Thank you. Thank you Shweta Gangwar viewer. Great work. Okay, thank you. Thank you. Bye, bachas. I shall see you all on Wednesday. Don't forget to log in. And 20th को राजवीर आ रहे हैं for fitness queries. ठीक है? Bye. See you all.